Ehsan Danish and Mohsin Trambu are the two opening batters out there in the middle for Secretariat Titans. Ehsan Danish has got a 50 as well. He got 42 in the second innings, in the second match. We welcome you on the platform of ANN News Channel for this match number 20 of J&K Qualifiers League. And I'm your English commentator, Baba Nisar. Let's see who operates the proceedings, who goes for the first over. Required run rate 8.80. They need to chase this score down in the course of 20 overs. It's 176. Fielders now taking their spots. Two match officials on the field, Javed and Sonu. And it's Umar who is going to start the proceedings. We welcome you all. Furqan around got 3 wickets. If we talk about Chairman Secretariat Titans, and eventually we find a very good comeback from them, and just restricted the Chairman DDC Srinagar on a score of 175. It's Umar who's got the ball in his hands to start the very first over. .176 is the target. First ball, down the leg stump, straight away. Wicket keeper not able to stop, and there are runs straight away. That is a welcome start to the chase. 4-leg buys, and the Secretariat Titans would love to have these runs. Got my fellow commentator with me, Mr. Saklan. Saklan, welcome to the box. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. कोशिश यही होगी अगर हम सेक्रेटरी टाइटंस के नज़रिए की बात करें, उनकी कोशिश होनी चाहिए कि स्टार्ट अच्छा मिले. तो पहली गेंद खराब की है उमर ने, अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी तभी मदद मिलेगा इस पिच से. Here he goes. Very good ball, a very good ball. It was outside the off stump. He was trying to make sure go deep in the crease and play it sensibly, and not connecting the ball. In addition to wicket-keeper, where quarter slips in the form of Captain Samir Vani, I believe. The third man in place. Next ball, and Canning! Just to the right of the slipsman. And it just falls short of the third man. And they go through for a single. Had he tried to play it with so much power, this ball could have carried to the third man, Saklan, I believe. बॉडी से दूर खेला था ये शॉट, और पीछे प्रोडक्शन मौजूद थी और अच्छी फील्डिंग वहां पे जो खिलाड़ी तैनात किए गए थे थर्ड मैन पे. 5 on the board. Next ball short of length, and it just pulls it for a single. Mohsin Trambu, he also gets off the mark. Both the batters are done with the singles. It's half a dozen for no loss. Secretariat Titans would love to get a victory and just have something to celebrate about. Chipping in there, just to the wide of the backward point fielder, and the ball has gone to the fence for 4 runs. That's a welcome boundary to Titans. एहसान दानिश बैकवर्ड पॉइंट के तरफ से चौका बटोरा, और 10 बगैर किसी नुकसान के. सेक्रेटरी टाइटंस कोशिश रहनी चाहिए स्टार्ट अच्छा मिले. अभी तक करंट रन रेट की बात करें तो 12 की है, तो अच्छा स्टार्ट मिला है अभी तक.
That's a good start. Eventually, Hasan Danish is in sublime form. Is in the form of his life. He would love to give it a finishing touch. Next ball, driven, standing tall. My goodness, what a shot that is! That's a glorious drive through the gates of cover region into the fence for 4 runs. So first over done. Titans chasing 176. They are 14 for none. You are stronger than you think. मैक्स सीमेंट। कामयाबी बस बैठे रहने से नहीं मिलती, ये मिलती है सही वक्त के सही फैसलों से। आपके फैसलों को कामयाबी के पहिए देने आ चुकी है टाटा की नई डीलरशिप Kashmir Valley Motor Pvt Ltd, authorized dealers for Tata Motors, showroom and workshop at National Highway Lasjan Bypass Srinagar. Call 9596 777 133. Javed now given the ball to start the over number 2. Danish, what a glorious cover drive that was. Down the leg stump, just hitting him in on his thighs. And they're not going for the runs. Second, just let's talk about Chairman DDC Srinagar. They need wickets to get back in the game. That's the way. जितने ज़्यादा विकेट्स पावर प्ले में लेंगे उतना अच्छा रहेगा। कोशिश यही होनी चाहिए विकेट्स लेने की, और अगर आप अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो विकेट्स तो ज़रूर मिलेंगे। और बल्लेबाजी की भी कोशिश रहनी चाहिए। अगर हम सेक्रेटरी टाइटन्स की बात करें कि शुरुआत अच्छी मिले, और अगर हम एहसान दानिश की बात करें, फॉर्म काफ़ी शानदार है इनकी, और ये जो कवर ड्राइव इन्होंने खेला था वो कमाल का था। हेड पोजीशन काफ़ी शानदार थी, और बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए वो गेंद गई थी। तो एहसान दानिश को आज 100 मारना पड़ेगा। Well, Hasan Danish, his trigger moment is always great. Oh, down the leg stump. Even though was their bat involved in the save or not? No, it's a leg by. And he's very disappointed that he could not set the ball out of the ground on that occasion. I was telling you the trigger moment of Hasan Danish. That is lovely to watch. His foot movement, his foot just angling towards the direction he's gonna play the shots. Next ball, just rides on to the top of the bounce and guides it down to the backward point. Once again, it's no more runs to the team. And on the part of the same, we feel it's very human situations out here in Gunny Memorial. टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 38-37 के आसपास होगा, और खेलना आसान नहीं होगा। अगर हम बल्लेबाजों की बात करें इस ह्यूमिड कंडीशन में, और गेंदबाजों की भी अगर हम बात करें, आसान नहीं होगा। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से क्या कैच आउट होंगे? जी नहीं, और चौका मिलेगा वहां पे, और अच्छी फील्डिंग वहां पे, शूज का शानदार इस्तेमाल करते हुए। अंपायर जरूर चेक करेंगे इसको। Well, I believe he just cut it short inside the limits of the boundary. And eventually that ball just ballooned up in the air, just not making sure it just reaches the distance. Double cruising, and it's 17 for none. A good start to the chase of 176. Next ball on the onside. There is a protection in the deep. I believe 2 overs done, chasing 176. They are 18 for none. ज्वेलरी तो सब खरीद लेते हैं, लेकिन खास ज्वेलरी खास लोग ही पसंद करते हैं। कारीगरी ऐसी जो मन को छू ले, और खिदमत ऐसी जो दिल को छू ले। तो हमें खिदमत करने का मौका दें और तशरीफ लाएं असावीर ज्वेलर्स, कश्मीर का अपना ब्रांड, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, श्रीनगर। In that last over Javed ball, it was very economical. One leg by, and there were 3 runs more than that. And Mudassir has been given the ball. A change in bowling straight away. And he's going to operate from that side screen and into ball to Hasan Danish. 12 of 8. Over the wicket he goes in. Stands onto the top of the bounce, bisects the gap between cover and point. The ball is running away. Oh! He's using his left boot and stops the ball. And 2 more runs to Hasan Danish.
Such a lovely timer of the ball. It's got all the time in the world. If we could have the replay of that last shot played by Ahsan Danish, is right onto the bounce and just bisects the gap beautifully. कोशिश ये नहीं करे कि जोर से मारने की कोशिश नहीं करे, टाइमिंग पे ध्यान दे रहे और वो इस खिलाड़ी को शानदार बनाता है. टाइमिंग पे ध्यान दे रहे और क्या प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स लगा रहा है. ये देखिए बैकफुट पे आए लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे. एहसान दानिश, आज एक अच्छी पारी आपको खेलनी पड़ेगी. आज जरूरत है सेक्रेटरी टाइटंस को आपकी. Well, Ahsan Danish, about him, his captain Asif did mention that he would love to have a century from his blade to just give a good touch, a good finish to the tournament. And both the teams have gone with 2 losses so far. They will love to go for a victory in their last match respectively. Next ball just played it back along the track, straight to the bowler, not for the runs. I believe there is some comeback from Chairman DDC Srinagar. हाँ, अच्छा कमबैक होता हुआ और आप इस बिंदी गेंदे 2 देख सकते हैं. 2 डॉट गेंदे और पहले गेंद पे 2 रन्स आए थे. तो मुदस्सिर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. मुदस्सिर थोड़ा सा मिश्रण करने की भी कोशिश कर रहे हैं. ये आप देख सकते हैं, मिश्रण किया और उठाया है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन्स के लिए. ये शॉट काफी कमाल का था और पलक झपकते ही शॉट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन्स के लिए. कमाल का शॉट और टाइमिंग पे टाइमिंग पे ध्यान दे रहे हैं, जोर से मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. और एहसान दानिश ब्यूटी, क्या शॉट लग रहे हैं इनके बल्ले से. It was a wonderful shot. Good with the timing, good with the placement, and good with the reaching to the pitch of the ball as well. Next ball, driven straight to the mid-off inside the circle, and Ahsan Danish is among those batsmen who love to take advantage of the circle. That's why he comes as an opener and takes the advantage of the infield. So far he has scored 69, his highest score. In the second match he got 42, and today is looking very good. This one chips the shot beautifully. No chance, he clears the infield beautifully, I was telling you. Couple of bounces over the ropes for 4 runs. इसी के लिए इनको भेजा गया है और ये काम भी ऐसा ही करते हैं. क्या शॉट था, कमाल का शॉट. और बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन्स के लिए 3 ओवर इख्तिताम पजीर हुए हैं, 28 बगैर किसी नुकसान के. सेक्रेटरी टाइटंस Javed once again into his very second over. First ball, very late to the shot, he just plays it down to the mid wicket for not runs. And talking about the field position, Samir Wani stands in the slips, a short third man in the form of Tahin Farooq Wani. A backward point, a cover and a mid-off. Just look at that gap we find between mid-off and cover and point. That is a shot. What a shot that is. And Mohsin Trambo has just dispatched the ball out on the ground. That has gone massive. खामोश थे, उस खामोशी को तोड़ा है मोहसिन ने और डायमेंशंस बढ़े थे मिड विकेट की तरफ और वहां से एक कमाल का शॉट मोहसिन के बल्ले से आता हुआ. स्टैंड एंड डिलीवर, कमाल का शॉट मोहसिन के बल्ले से और 7 पे पहुंचे हैं. अपने निजी स्कोर को 7 पे पहुंचाया. और अगर हम सेक्रेटरी टाइटंस की बात करें 34 बगैर किसी नुकसान के. The moment it left the ball, 6 runs were written on that. Same in the direction, caught! Beautifully caught this time. What a great catch. That is the catch of the match, I believe, so far. It was running forward and ultimately had to dip down a bit and finally a wonderful catch. And Mohsin Trambo departs. This time he could not clear the distance. He goes. It's 34 for 1 and Javed provides a breakthrough. जावेद ने सफलता दिलाई अपनी टीम को. और कैच की अगर हम बात करें उसकी तारीफें करनी चाहिए. क्या कैच पकड़ा है, आसान नहीं होता ये कैचेस ऐसे पकड़ना. और गेंद पे निगाहें थी और कमाल का कैच पकड़ा. पहले विकेट का पतन होता हुआ. अगर हम सेक्रेटरी टाइटंस की बात करें, जावेद ने वो सफलता दिलाई अपनी टीम को. वो काम किया है जावेद ने जिसके लिए इनको भेजा गया था. और
अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं खेलने के लिए। आदिल हुसैन, अब यहाँ से अच्छी पारी खेलनी होगी। अभी तक स्टार्ट अच्छा मिला था, और अगर हम करंट रन रेट की बात करें 10 के करीब है, तो करंट रन रेट अच्छी है, बट अब इसी मोमेंटम को आपको आगे बढ़ाना चाहिए। और 3 गेंदें अभी बची है जावेद के ओवर की, वो भी कोशिश करेंगे एक और विकेट यहाँ से लेने की कोशिश होगी। क्या वो काम करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अभी भी सुबह 142 रन अभी भी चाहिए, और अगर हम रुके रेट की बात करें 8.5 के आसपास है। ज़्यादा कुछ आपको प्रयास करने नहीं, ज़्यादा कुछ आपको यहाँ से काम करना नहीं है। स्ट्राइक को आप रोटेट कर सकते हैं, और जो खराब गेंद मिलेगी उसको, उस पर आप अच्छे शॉट्स खेल के अपने इंडिविजुअल स्कोर और अपने टीम के स्कोर को बढ़ा सकते हैं। कोई रन नहीं मिला इस गेंद पे, और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं जावेद की अगर हम बात करें। 1 विकेट तो इस ओवर में ले चुके हैं, और मनोबल उनका 7वें आसमान पे होगा। कोशिश यही रहनी चाहिए, 2 गेंदें भी अच्छी करें। और फिर यहाँ से अगर हम बात करें आदिल हुसैन और एहसान दानिश की, एहसान दानिश अच्छे टच में है, तो आदिल को साथ देना चाहिए एहसान दानिश का, जिनके बल्ले से अच्छे शॉट्स देखने को मिले। In fact, he will have to definitely provide. This one chips in it. Oh, drops it. Can you believe it? The catch has been dropped. This could have been taken, and it was not a great, difficult catch to go for. Had this catch been taken, I believe Adil Hussain would have been back to the hut on a knot. This can turn out to be the turning point of the match. 35 for 1. X-Ball makes it sure, hits it square off the wicket. That's a square drive, chipping in and just making sure, hitting him over the head of the point fielder for 4 runs. That is Ehsan Danish for you. 4 done, it's 39 for 1. And once again, we are being joined in the box by Mr. Mudassir Yaqub Saab, Executive Editor, ANN News. And we will continue the discussion and talk related to this very J&K Qualifiers League. And especially if we talk about Edition 2. And Mudassir Saab, discipline, a very, very important factor of the J&K Qualifiers League. In this ongoing tournament, we have seen that the officials of the tournament have detected some overs of the teams for reporting late. So I have been witness to this thing that the teams are habitual of reporting late at the venue. But as we want to calculate the professional cricket among our players, so in next edition it would be a lesson for all those teams who have reported late. And rightfully, during the first inning, you rightly quoted that some of the players have been banned and some of the teams have been disqualified because of the indiscipline. Actually, it gives us trouble inside while banning someone or disqualifying any team. But it's very important here to take these measures to teach them professionalism. So in second edition, we are taking some extra measures so that all teams who are registered are professionals and they are committed to the game. Next ball, just guiding it beautifully, guiding it well. Third man will come in to cut the ball off. And let's talk about registration. I believe, tomorrow will be the official announcement for the same. So we are getting calls, being a commentator, I do personally get many calls by the team to just when the second edition gets started. So let's talk about the number of the teams who are going to get registered for the second edition. Is it going to be 16? Is it going to be 32? Or is it going to be 64? Or is it going to be a league or a knockout basis? We would love to get some information about the same. As of now, we have concluded that it would be 16 teams and it would be a league. But I think this evening we are going for a final meeting wherein we are going to take the final call. And if we are going to take the 16 teams, it's also under consideration that one team from one area would be allowed.
and we have also decided that first come first serve would be the criteria. We don't want to block any team except those who have been disqualified, and the players who have been banned in this ongoing tournament would not be allowed to play for any team in the upcoming tournament. Next ball flicked away beautifully, and the ball has gone the distance for a massive 6. And if you flick the ball like that, you just carry go and go for the distance. Adil Hussain just chips in beautifully, and he's batting on a dozen. And Mudassir Saab, ANN News channel, the first of its TV channel out here in Kashmir, and it's turning out to be the first of its sport channel in Kashmir as well. You believe in the coming time more of the sports events, more of the sports related information, more of the sports related programs and functions are gonna be given great kind of focuses on the platform of ANN News channel. ANN News, the prime responsibility of ANN News is to disseminate the information by way of current affairs and the news programs. But at the same time, we know that this is the first and only TV news channel of the Kashmir. So we decided that we have to provide the platform to our youth and to the different sections of the society. So we have decided that we must give some time to the sports of our television. And we are doing that. And we will keep moving in this direction because through our lot of programs we have received a lot of love from our viewers and from the concerned people. And since we have started this cricket tournament, we are receiving a lot of love, lot of appreciation from the beloved viewers of the ANN News, and we will continue, inshallah. We will continue definitely. Talking about, we have got the two sides of the same coin. One side we go for good feedback, other side of the coin we go for a negative feedback. And being a very, very senior official of this very ANN News channel, being associated with this for a long time, how do you react and how do you take this negative reaction and negative feedback, and how do you accept this kind of a challenge? Does it give you some more encouragement to come stronger, and does it give you some kind of that confidence that you want to come in a very, very better way? Positive criticism is also a constructive for us, and we are taking that very seriously and very with open arms, because as soon as you want to improve, then it's very important that you take the positive criticism from the people, from the viewers, and you improve. So of course we have received some of the feedback from the people which were negative, but we have taken that negative feedback very positively, because those all feedbacks are very constructive, and we have promised them that we have forwarded all those suggestions to our technical team, to our engineers, and to our other teams. They are working on that to improve the further. Ball, and wicketkeeper misses, so does the batsman, and the ball just goes down to the fence for 4, and eventually history created. And for getting this live telecast first time in the Kashmir cricket, I believe the history is going to remain the same for bringing some more improvements in the next edition. Yeah, of course, and I have been also told that in rural areas, not only youth but our mothers and sisters are also watching these games on the television, and they are very happy that we have a youth who can perform like this. And in fact, I have received some of the calls on my personal number also from the friends and from the people whom I don't know personally. And they have talked very good about this tournament, and they are talking very good about the players, about the match. And Baba Sahab, I must also compliment you that we have received a lot of love for you also, for your professional commentary. And I must tell you here on this platform that people have also prayed a lot for you. Thank you very much. And final question for you, Mudassir Yaqub Saab. I know that your time is pretty important for yourself and for ANN News channel as well.
what suggestions and what advices, your valuable advices will be for the young guns of the valley, young cricketers of the valley, as far as this very J&K Qualifiers League is concerned, and also keep in mind the second edition in place. As I have seen, there are a lot of opportunities for everyone, but often people don't know those opportunities. As we initiated this tournament, a lot of people came to us after we had closed the registration and asking us for the registration. So simply, I would like to tell the youth that whatever the skill they have, they must excel in that, and they must have a close eye on the opportunities. As we are going for the second edition, if you are a professional cricketers, if you have a professional cricket team, please go for the registrations and don't complain later on that you did not get the chance to have a registration in tournament. And I would like to reiterate that we have the policy of registration first come, first serve. Except those teams who have been disqualified cannot participate. Except those players who have been banned by the tournament officials cannot participate. Rest, every team is welcome. First come, first serve is the policy. Please make a registration and make sure your participation in that tournament. Thank you. Thank you very much, Mudassir Saab, for your valuable time, valuable suggestions and valuable advices as well. And on the next poll, I believe there is a review. It was a very, very low bouncer. The batsman was trying to hook it, and I believe the bails were off. I believe he just touches the wickets. That's why we got a review for the same. Score 65 for 1. Secretariat Titans going at a run rate of more than 11 at the moment, and the required run rate has gone just under 8. 111 अभी भी जीतने के लिए चाहिए सेक्रेटरी टाइटंस को। थर्ड मैन की अगर हमें यहाँ टीवी अंपायर की मदद ली गई है तो डिसीजन का अभी भी आना बाकी है। 176 का लक्ष्य मिला था इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। सेक्रेटरी टाइटंस को एक विकेट ऑलरेडी गवा चुके हैं, तो यहाँ से देखने वाली बात होगी डिसीजन क्या आएगा। डिसीजन अभी भी पेंडिंग है और डिसीजन आता हुआ आउट करा दिए गए हैं। आदिल हुसैन पवेलियन की ओर जा रहा है। अब नए बल्लेबाज का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ से कौन होंगे वो नए बल्लेबाज और किस स्ट्रेटजी के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश उनकी रहेगी। सेक्रेटरी टाइटंस 65 2 विकेट के नुकसान पे पावर प्ले इख्तिताम पजीर हुआ है। First ball, way outside the off stump. Power play complete, 66 for 2.
Bowling 1 over for 18. Imtiaz 3 overs for 34. Asif Iqbal 4 for 37. Tahir 4 over 30. Harun 4 over 34. Shaukat 2 overs 22 for 2. Mushtaq and Mohsin Trambu 1 over each. Both maidens and no wickets. It was from the side of, if we talk about the bowlers. And now let's go to Secretariat Titans. 110 needed after 14 overs. The required run rate is needed for them, just approximately 8. Here is a first ball from Naveed. Down the leg stump, sweeps it beautifully. Ehsan Danish is now into the 30s. He would love to convert it into a 50. And he would love to finish at a very good score. And Ehsan Danish Saklan, I believe, is a very great batsman of Secretariat Titans. शानदार खिलाड़ी है पहली इनिंग्स की. अगर हम पहले मैच की बात करें वहाँ पे भी अच्छा कार्य किया था और यहाँ से भी अच्छी पारी खेल रहे हैं अभी तक. अगर हम एहसान दानिश की बात करें 33 पे खेल रहे हैं. कोशिश रहनी चाहिए इसको कन्वर्ट करने में 3 डिजिट्स में. क्या आज कर पाएंगे वो, ये देखने वाली बात होगी. Tries to sweep the next ball, but is appealing for the same. I believe he might be feeling in some situations of the problems. He started to go off to his partner without taking, and up goes the finger, is gone. Yes, that's a proper decision indeed. He just tried to have a talk with his partner, but without taking the decision freedom and permission from the umpire. That is a very great presence of mind from the wicketkeeper, I believe. Wicketkeeper must be given the credit and applaud on the same. And Mushtaq, very unhappy and very disappointing, walking back. And these are the real gestures, real sports spirit men. This is the spirit of sportsmen over there. The captain finds him back and he asks him to come back for batting. What do you say about the same? दिल जीत लिया है यहाँ पे. अगर हम यहाँ से बात करें है It reminds me of DDC श्रीनगर की, तो इन्होंने आज दिल जीत लिया. क्या डिसीजन था ये? Well. It reminds me of great Ricky Thomas Ponting. Once he just allowed Sachin Tendulkar for the same. And then these are the remarkable scenes. It was given out, but credit and gestures shown by Chairman DDC Srinagar. These are lovely scenes. बिल्कुल ये नज़ारे आपको कहीं और पे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आज दिल जीत ले. पता है इस विकेट की अगर हम बात करें तो यहाँ से जीतना, अगर कोई भी महत्वपूर्ण का काम नहीं करेगा यहाँ से, अगर आप जीत भी लेंगे यहाँ से तो अच्छे से फिनिश करेंगे टूर्नामेंट को. बट ज़रूरी ये मुकाबले की अगर हम बात करें, करो या मारो की स्थिति अभी है नहीं. Well, once I remember a test match between India and England, Ian Bell was given out. Maybe I may be wrong, but Sachin, Mahendra Singh Dhoni and Virendra Sehwag called him back. And today we have seen the same wicketkeeper showing great presence of mind. The batsman was out, and when he was on the way back to the dugout, he was recalled by the captain, Mr. Samir Vani, and he has won the hearts all over. He has won the hearts all over. पहली बार ऐसा सीन हमें यहाँ से नजर आया है अगर हम J&K Qualifiers League की बात करें. और आज दिल जीत ले इस डिसीजन से. आउट ये जा भी रहे थे लेकिन वापस बुलाया, और क्या नज़ारे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे. Next ball driven on the onside. Ehsan Danish stands there. He is a great batsman. He has all the shots in his book. And he's just utilizing all his skills properly. 69 for 2. 107 still needed. A very quick ball, too close to cut. It was closing his body. And when you have ball pretty closing your body, that's pretty difficult to cut the ball. 7.2 overs bowled. The run rate just over 9, and the required run rate, that is over 8. Next one, chips the ball beautifully. I played, it has gone the distance. Yes, it has gone. That is typical Ehsan Danish for you. It's just so powerful shot. So powerful cricketer, I tell you.
Just watch the shot. If we could have the replay, please. Inside out and beautifully hit. And beautifully just lining him up for the shot. And Ehsan Danish is a majesty. टाइमिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं. अगर हम इनके शॉट्स की बात करें, जोर से मारने की कोशिश नहीं करते हैं, टाइमिंग पे ध्यान देते हैं. और रिप्लेस की अगर हम बात करें, वहां से आप देख सकते हैं कि क्या शॉट था. और हेड आई कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें, वो भी शानदार रहती है. और कदमों का इस्तेमाल किया और एक शानदार छक्का इनके बल्ले से आता हुआ. Ehsan Danish, he is really showing all his potentials out here. Expol pulls it. The ball might be cut off. Yes, it is. And a very good throw. And Ehsan Danish quickly goes for the second run as well. That's a good running between the stumps. And we should definitely, applaud his presence of mind. Ehsan Danish, so great runner. And he's into the 40s. He's on 41 of 26 balls. Will he go to his half century? In go Javed. Next ball, straight bat. This time again, one bounce to the extra cover region, 4 runs. What a shot that was from Ehsan Danish. Just making sure his trigger movement is great. And he just comes behind the line properly and plays with that V. And he just finishes off in style. He is a very great hitter of the ball. और गेंद की पिच तक पहुंचते हैं, ये इनकी खासियत है. ये देखिए बैकफुट पे शॉट खेला डी पॉइंट की तरफ. पीछे खिलाड़ी है. अगर हम इनके शॉट्स की बात करें, दूर से मारने की कोशिश नहीं करते हैं, पिच तक पहुंचते हैं और उससे जो शॉट्स लगते हैं वो कमाल के लगते हैं. 8 overs done. This over conceding 14. It's 82 for 2. 82. मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार. ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले. आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले. Naveed once again into the attack. Next ball, driven square. The outfielder looking quite low. And Mushtaq will find a double. They're just cruising towards the target line. 84 for 2. Now we have got only 94 runs needed of 11.5 with 8 wickets in hand. Oh, good ball. And let's talk about the wickets. Only 2 of them have fallen. And if Chairman DDC Srinagar want themselves to be in the game strongly, they have to take wickets that too many numbers. विकेट्स लेने पड़ेंगे और जितना आप विकेट्स लेंगे उतना अच्छा रहेगा आपकी टीम के लिए. और विकेट की अगर हम बात करें, वो बिल्कुल सपाट नजर आ रही है और खेलना आसान नजर आ रहा है. तो कोशिश रहनी चाहिए बड़े शॉट्स के लिए जाइए जब खराब गेंद मिलेगी. ये बैकफुट पे आए, करारा शॉट, लेकिन प्रोटेक्शन पीछे मौजूद है डीप कवर में. और 1 रन मुकम्मल किया बल्लेबाज एहसान दानिश ने और निसफ सेंचुरी के नजदीक आ गए. अब 1 रन चाहिए उनको. क्या आज निसफ सेंचुरी मुकम्मल करेंगे और फिर उस स्कोर को 3 डिजिट्स में कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं. ऑन ड्राइव किया है, पीछे प्रोडक्शन है, क्या 2 की मांग रहेगी. 1 रन, मात्र 1 रन ही वहां पे मिलेगा. और अब रन्स काफी ज्यादा चाहिए और रुका रेट 8 की है. ज्यादा कुछ जोखिम भरा काम नहीं है, बट यहां से आपको तालमेल के साथ पारी को आगे बढ़ाना पड़ेगा. 49, 1 needed. This time has gone. Is it in? They're going to be caught. Just falling short of the mid-wicket region, and with this, Ehsan Danish gets to his half century. Not getting it on the sweet part of the blade or the ball. Could have gone all over the mid-wicket region. He's just raising his bat towards his dugout. And he's been given a standing ovation from all his teammates. What a great half century from Ehsan Danish. Second half century of the tournament from him. He is surely a wonderful batsman. Excellent timer of the ball. And having this kind of affection in your batting, you are surely turning out to be a hero of your team. Ehsan Danish
A wonderful timer, a wonderful hitter, a wonderful driver, and a wonderful puller off the ball. 50 of 33. Still counting. Down the track he goes. Oh, beautifully gone. And there's a wonderful catch taken at the short cover, I tell you. And I believe it's Mushtaq who just departs. Could not keep the ball down. Rather, it's Ehsan Danish, beg your pardon. Ehsan Danish departs. He departs for 50 of 34. A very, very great knock comes to an end. 50 scored and eventually scored at the cover region. And Ehsan Danish, what a knock. अच्छी पारी खेली इन्होंने और वहाँ से कोशिश थी फील्डर के सर के ऊपर से खेलने की, लेकिन वो अभी तो जो इनिंग्स खेली है वो अच्छी रही है आज एहसान दानिश, बट कोशिश इनकी रहनी चाहिए थी कि आज शतक लगाते और एक अच्छी पारी खेल के अपनी टीम को जिताते, लेकिन आज वो किया नहीं। अब नए बल्लेबाज का इंतजार किया जा रहा है। 3 विकेट के नुकसान पे और 5 गेंदों का अभी भी आना बाकी है इस ओवर में। और अगर हम रुकर रेट की बात करें वो 8 के आसपास ही नजर आ रही है। 89 रन अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए आपको चाहिए। मुश्ताक अहमद अभी भी खड़े हुए मैदान पे, जिनको एक चांस दिया गया था। विकेट कीपर ने जब स्टंप की अपील की थी, आउट करा दिया गया था, उसके बाद उन्होंने एक अच्छा गेस्चर दिखाया और वापस बुलाया था उनको, लेकिन एहसान दानिश आउट हुए। अब आसिफ आया है खेलने के लिए। अब आसिफ कैप्टन आया है खेलने के लिए। आज कैप्टनी पारी आपको खेलनी पड़ेगी अगर अपनी टीम को आज जिताना है, तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट परफॉर्मेंस आपके बल्ले से आनी चाहिए। अगर हम आसिफ की बात करें 89 रन अभी भी चाहिए और 5 गेंदें अभी भी आनी बाकी है इस ओवर की। एक स्लिप के साथ गेंदबाजी हो रही है। एक बैकवर्ड पॉइंट पे एक खिलाड़ी प्लेस है, कवर पे भी एक खिलाड़ी प्लेस है। कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए खेला बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, और क्या दूसरे की मांग रहेगी। दूसरा रन तेजी के साथ मुकम्मल किया। शानदार रनिंग मिड द विकेट दोनों बल्लेबाजों की अगर हम बात करें, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट पे एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। और मीर की अगर हम बात करें, गेंदबाजी अभी तक अच्छी की है, 2 गेंदें की है और अभी तक 1 विकेट उन्होंने हासिल किया है। कोई भी रन नहीं मिला इस गेंद पे। तो अब जो रुकर रेट है वो 8 के 8.5 के नजदीक आ रही है। यहां से स्कोरबोर्ड को चलाना पड़ेगा, तभी दबाव आप पे आएगा नहीं। स्कोरबोर्ड को चलाते रहिए। अपील हुई है, लीजिए, उंगली उठ गई, क्या रिव्यू वहां पे लेंगे? ये ले लिया है, मदद ले ली है थर्ड अंपायर से वहां पे, और टीवी अंपायर अब डिसाइड करेंगे कि अंत आउट है या नहीं। और कॉन्फिडेंट लग रहा है वहां पे कि नॉट आउट, ऐसा लग रहा है। ये जो अगर हम रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन से बता रहे थे कि मैं आउट नहीं हूं, लेकिन जो भी बल्लेबाज होता है वो जरूर ये बोलता है, लेकिन अब ये डिसाइड होगा कि आउट थे या नहीं। और जल्दी रिव्यू लिया, क्योंकि 15 सेकंड के अंदर अंदर ही आपको ये लेना होता है। जल्दी रिव्यू लिया। अब यहां से क्या डिसीजन आएगा, रिप्लेस में आपको जो भी एंगल्स हमारे पास अवेलेबल है उससे चेक किया जाएगा कि आउट है या नहीं। आसिफ कैप्टन, क्या आउट होंगे या नहीं? अंपायर का डिसीजन था आउट, तो यहां से चेक किया जा रहा है। मदद मांगी गई है टीवी अंपायर से, तो डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। तुम बॉल हवा पत्थर की तीन स्कोर चेस कर टी स्टार्स ना सो चेस कर मगर तम तूर मैच अब भी समय लिया जा रहा है। ANN म्यूजिक एडिटर चीफ
He is coming back to the dugout, very, very disappointed. And out walks to the middle, the new batsman, the right-handed batsman. And some problems being created for Secretariat Titans after the departure of Ehsan Danish, who always bats well. And this time that has been pulled. And he just opens off with a single. Harun, I believe, who bowled well, got 3 wickets. This time he plays it sensibly. Bowler does the job, and it's a dot ball. 2 wickets in this over. And we are done with the halfway. 10 done, 90 for 4. मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कमल मसाले, वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड। ये सिर्फ मसालों तक ही महदूद नहीं, बल्कि कमवल आप तक जायकेदार अचार और शाही कहवा भी पहुंचाता है। ग़िज़ाइयत और लताफत से भरपूर कमल मसाले रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। हम हैं कमल मसाले। Just sweeps it, rather the ball takes the edge. And over the long leg it goes for 4. The bat was involved in the same, and Harun will fetch a boundary. Goes on to 5. And score now cruising towards that triple mark. It's 95 for 4. 6 wickets in hand, 81 needed of 60. 8.10 runs per over, the required run rate. Next one, oh, wraps him on the pad. And I believe there was bat involved in the same as well. $95 for 4. This time again sweeps it beautifully. The ball is running away. Oh, stopped it by using his boot. A good stop. Trying to go for the 3rd run as well. No, just stops for 2 only. And a good running between the stumps. 97 for 4. 7 after over. For Spall turning out to be the 5 wides. And now let's see how Harun plays the next balls. Next ball just guides it. Oh, good running against a shine. No, not hitting the target directly. And that wayward throw providing them ample time to go for the 2nd run as well. 99 for 4. Just 77 runs behind. It should not be any problems for the batters of Secretariat Titans to chase the score down. And all they need to do just believe in rotation and believe in 1s and 2s. Expol sweeps the ball beautifully. And good fielding at the backward square leg region. It's Hendren on the ball exactly. It's 1-0-0 for 4. And Mushtaq and Harun to fresh batters at the middle. Siklan, they've got a job to do. अच्छा काम कर, ये देखिए कमाल का शॉट खेला और बाउंड्री से बाहर 4 रन्स खेलिए और स्कोरबोर्ड को चला रहे हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं। जो खराब गेंद में रहे उसको अच्छी ने से दे रहे हैं और स्कोरबोर्ड को चला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम मुश्ताक अहमद और हारून की बात करें, That was a bit of a sweep shot. And he's just scoring a boundary of the ball number 5, and the score goes to 104 for 4. And Mushtaq now chips on to 7 of 8 balls. And a partnership is building between these two. रिक्वायर्ड रेट भी अब 8 से नीचे आई है, तो अब मुझे लगता है ज़्यादा अब खतरा है। अगर हम गेंदबाजों की बात करें, अपील हुई है, लीजिए, तीनों विकेट्स के सामने पाए गए और जा रहे हैं ओझल कदमों से। और इसी विकेट की अगर हम इस विकेट की बात करें, चाहिए था और वो विकेट मिल गया है, अब वापस आ सकते हैं मैच में। Partnership broken on the last ball after over number 11. He was looking to play it across the line, just missing the line and found in front of the stumps completely. And he goes LPW. Naveed gets the first wicket of his quota. He has bowled 3 overs, 1 for 21.
14 after over, but eventually just compensates and finishes it with a wicket on the last ball. 11 done. Secretariat Titans chasing 176 of 104 for 5. It finishes it with a wicket on the last ball. Monda, Sanjina Taga, Yash Takdir from Banao, Jeshna Pai Takdir. Sweeping the first ball. The ball just rolls on to the short square leg region. Not hitting it properly on the blade, and they go through for a single. Just hitting him on his pads, trying to go for a single, trying to sneak one. And not hitting on the same. 105 for 5. The run rate is over 9. Good run rate for them. And appealing for that LBW once again. Oh, it's a review. It's a review for the LBW, and wicket-keeper was very, very serious and interested for that LBW decision. Saklan, what is your take on the same? कोशिश थी वहाँ पे दबाव बनाने की अंपायर पे, लेकिन अब थर्ड मैन अगर हम यहाँ से बात करें टीवी अंपायर से मदद ली गई है, तो देखने वाली बात होगी डिसीजन क्या आएगा। आज थर्ड अंपायर की अगर हम बात करें, उनको भी काफ़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी है। आज 2-3 रिव्यूज़ लिए गए हैं, तो क्या डिसीजन आएगा ये देखने वाली बात होगी। महराजुद्दीन अभी कोई रन नहीं बना पाए हैं। अपील जोरदार हुई थी, अंपायर पर दबाव बनाने की कोशिश हुई थी, बट अंपायर ने सीधे नकारा और मदद ली गई टीवी अंपायर से। तारिक साहब जो टीवी अंपायर है हमारे, क्या डिसीजन आएगा? फैशन फिएस्टा वादी में कायम मुनफरद फैशन स्टोर, जहां पर 70% तक आला और मयारी मसनूआत पर छूट दी जाती है। यहाँ पर किड्स वेयर के साथ साथ आपके स्टाइल और अंदाज को 4 चांद लगाने वाले गारमेंट्स, विंटर और समर वेयर, ब्रांडेड शूज और मुख्तलिफ आला किस्म के ब्रांड से वाबस्ता मसनूआत फरोख्त की जाती है। जल्द विजिट कीजिए हमारे फ्लैगशिप स्टोर, वाका 3rd फ्लोर, सिल्वर स्क्वायर, जवाहर नगर, श्रीनगर। It is not out. Yes, it's not out. Next ball just sweeps it. There is a protection in the deep, and they go through for a single. It's 106 for 5, and they're away 70 of 50 balls. Harun 7 of 6, Merajuddin 1 of 3. Short third man with wicket-keeper pretty close behind the stumps. Backward point, a deep cover point, a short cover and a long off. And if we look on the onside, we got a long on, we got a mid-wicket, and we got a square leg as well, a short fine leg inside the circle. A full toss, and not trying to advantage of the same Tahin Farakwani. A great effort out there at the mid-wicket. He just came quickly and stops the ball and just negotiates with the chances for going for the second run as well. Only singly cruising 4 after over, 12 done.
It's 108 for 5. Equation now remains 68 to 48 with 8.5 required run rate. And those 3 quick wickets back to back have surely set them back on the back foot. Next one. Try visit straight to the covers. There is no addition to the total. 68 रन चाहिए इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए और रुका रन रेट 9 के आसपास ही है। और उठाने की कोशिश हुई थी, गेंद और बल्ले का मिलन नहीं हुआ। डॉट गेंद 108, 5 विकेट के नुकसान पे। सेक्रेटरी टाइटंस क्या आज एक मुकाबला जीतेगी और अच्छे से फिनिश करेगी इस टूर्नामेंट को? वही से कोशिश रहेगी चेयरमैन डीडीसी श्रीनगर की कि इस मुकाबले को जीता जाए। विकेट कीपर भी चूके और बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए तोहफा मिलता हुआ यहां से टीम सेक्रेटरी टाइटंस को, क्यों ना वो 2-2 हाथों से इनको ले और बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए 112, 5 विकेट के नुकसान पे। अब 64 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए और 8.5 की अब रुकन रेट हो गई है। तो पार्टनरशिप यहां से बिल्ड करनी पड़ेगी और जो खराब गेंद मिलेगी उसको सही नसीहत देनी होगी। स्कोरबोर्ड को आप चलाते रहिए, वो अच्छा रहेगा। अगर हम सेक्रेटरी टाइटंस की बात करें, इस बार मिड विकेट के तरफ गेंद को खेला है और पीछे प्रोडक्शन मौजूद है। 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया, 5 रन आए इस ओवर से। 2 गेंदें अभी भी बची है इस ओवर की। नवीद 26 रन खर्चे है, 1 विकेट, 1 सफलता मिली है, कोई भी रन नहीं मिला इस गेंद पे। तो 5 रन कंसीडर किए अभी तक। मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद है 22 नंबर जर्सी के साथ। 113, 5 विकेट के नुकसान पे सेक्रेटरी टाइटंस। इस बार फुल टॉस पे लिया, स्वीप खेला है, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं, रोक पाएंगे क्या? जी हां, और दौड़ के दूसरा रन भी मुकम्मल किया। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों बल्लेबाजों की अगर हम बात करें। 13 ओवर इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। 115, 5 विकेट के नुकसान पे सेक्रेटरी टाइटंस। You are stronger than you think. First ball after over number 14 has been played and down to the mid-wicket region. And easy pickings for them, a single cruising. This looks quite simple for these two batters now. With every ball this is going through for singles and taking the boundaries as well. Next ball, deep in the crease he goes, pulls it. And could not hit it for the distance, only a single cruised. But one good thing, Saklan, between the two batters at the moment, they just keep the scoreboard ticking, keep on ones and twos. स्कोरबोर्ड को चला रहे हैं, आप देख सकते 2 सिंगलें ली है, तो ये अच्छा है। अगर हम सेक्रेटरी टाइटंस की बात करें और सिंगल्स ले रहे, ज्यादा डॉट गेंदें नहीं खेल रहे, ये इस टीम के लिए अच्छा रहेगा। और जो रास्ता है वो हमवार हो जाएगा जब आप ये रणनीति दिखाएंगे, जब आप ये स्ट्रेटजी दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा आपकी टीम के लिए। 59 रन अभी भी चाहिए। अब रुकन रेट 9 की हो गई है, विकेट सेव करके रखे हैं। Well, half the team gone and half the team remains. 59 of 39. The required run rate has gone past 9. Next one, it just belts it hard towards the long on. Once again, only a single. And having the run rate of over 9, you just need to have a boundary every over. Next ball, full toss up in there, shot finally, making no mistake. It takes it comfortably. And Harun departs for 11, and Mir Shahid has got the wicket number 2. Rather, it will be his wicket number 3. And Secretary Titans, they are on the back foot, Saklan. और जब आप एक ही शॉट ट्राई करते हैं तो आप कभी कभार प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, और वही कर रहे थे बल्लेबाज हारून। स्वीप पे स्वीप मारे जा रहे थे और जो गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी उस पे भी स्वीप मारने की कोशिश हो रही थी, और जो अच्छी गेंद थी उस पे भी स्वीप मारने की आपको चाहिए था। वहां से आप ड्राइव भी मार सकते थे और सिंगल को रोटेट कर सकते थे, लेकिन स्वीप फिर से खेला और इनिंग्स का हुआ खात्मा। हारून 11 रन बना के जा रहे हैं।
अब यहाँ से मुझे लगता है टेल शुरू हो गई है, अब परेशानियां होगी सेक्रेटरी टाइटंस को, और कोशिश रहनी चाहिए चेयरमैन डीडीसी श्रीनगर की कि और दबाव बनाया जाए और 1-2 विकेट्स ले। अगर हम चेयरमैन डीडीसी श्रीनगर के खिलाड़ियों की बात करें, दबाव बनाने की कोशिश होनी चाहिए इम्तियाज अहमद पे, और बड़े शॉट की तलाश में थे वहां पे, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका, कोई भी रन नहीं मिला। 14 ओवर इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। सेक्रेटरी टाइटंस 118, 6 विकेट के नुकसान पे। आपके शहर में सैमसंग लाया है इजी शॉपिंग के लिए एक एथोराइज स्टोर, जहां पे आप अपने घर के लिए ले सकते हैं अच्छे अप्लायंसेस। सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बेबी बेन, जवाहर नगर, जहां आप टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एसी, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन्स या एसेसरीज ले सकते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद सैमसंग फाइनेंस प्लस फैसिलिटीज, जो आपकी जेब का प्रेशर कम करेगा। क्या शॉट है ये, पीछे प्रोडक्शन मौजूद नहीं रोक पाए, और बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। पावर था इस शॉट में, और शुरुआत चौके के साथ हुई है। और समीर, पहली गेंद थोड़ी सी ओवर पिच थी और सही नसीहत देते हुए बल्लेबाज महराजुद्दीन। अब 54 की दरकार है, 1-2 ओवर को टारगेट करने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन तोहफे में आप विकेट ना दें तो बेहतर रहेगा आपकी टीम के लिए। एक डीप पॉइंट सेट किया गया है और बैकवर्ड पॉइंट पे एक खिलाड़ी प्लेस है, एक थर्ड मैन, एक स्क्वायर लेग और एक मिड विकेट पे एक खिलाड़ी को प्लेस किया गया है, और एक लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी को प्लेस किया। लॉन्ग ऑफ पे एक खिलाड़ी है जी नहीं, तेजस के रेखा के अंदर उनको बुलाया गया है, तो लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी को प्लेस किया गया है। यह है फील्डिंग की जमावट। अभी भी 54 रन की दरकार है इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। 54 रन चाहिए और 9.26 की रिकॉर्ड रेट है। Samir Vani just comes into the attack for the first time in the game and is being welcomed with a boundary. He comes up with the next ball. Down the track he goes, just over the backward point. He jumps but could not jump to the perfection. And that's a back-to-back boundary from Merajuddin. And here comes some cheer on the faces, some smiles on the faces of the dugout. Talking about Secretariat Titans. 8 of the very first 2 balls. And I believe this is the over they're going to target. 50 of 34. Now wicketkeeper making sure he just comes closer. And bowled him! What a ball! Just tries to play across the line, just missing it. And the target has been hit directly. Samir Vani captain. He comes up with a breakthrough. 7 done. Secretariat Titans with 126 on the board. Come on, come on, come on, come on, you can do this. Come on, come on. I say come on, come on, you can do this. Come on, you can do this. Come on, come on, come on, come on. अगर छूना है आसमान को मजबूत, अपनी सोच रख बुनियाद जब पुख्ता बने परवाज़ फिर अपनी दूर रख Stronger than you think. Max Cement. Let us now get exposed. Tahir, who is a very, very senior most cricketer of Secretariat Titans. He just bowls spin. And now he's being tested out there in the middle. Can he come up with some runs? Full toss. Oh, chance up and now. Oh, directly has hit him. It's gone. And what a throw from Samir Vani. And it's miscommunication between the two. And Tahir departs. Rather, Imtiaz Ahmad departs. That's not the way you would love to get out.
What's going on with Secretariat Titans, my boy? You are just losing it, and you are losing the grip as well. अब जीतना नामुमकिन सा हो गया है। अगर हम सेक्रेटरी टाइटंस की बात करें, बुलजाई, डायरेक्ट हिट और जा रहे हैं पेविलियन की ओर। अब यहां से क्या करेंगे जो आने वाले दो बल्लेबाज हैं? Come on, you can do this. Come on, come on. I say come on, come on. You can do this. Come on, you can do this. Come on, come on, come on, come on. कर छूना है आसमान को मजबूत, अपनी सोच रख बुनियाद जब पुख्ता बने, परवाज़ फिर अपनी दूर रख। You are stronger than you think. मैक्स सीमेंट। गौहर, माफ कीजिएगा, गौहर थे और 15 ओवर इख्तिताम पर 0 है। 126 8 विकेट के नुकसान पे सेक्रेटरी टाइटंस 50 रन अभी भी चाहिए 5 ओवर्स में। रुका रेट 10 की। फुरकान गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और रुका रेट 10 की। 5 ओवर्स में 50 चाहिए। बड़े शॉट्स आने बहुत जरूरी। सेक्रेटरी टाइटंस की बात करें, खेला है फाइन, पीछे जा रहे खिलाड़ी, क्या रोक पाएंगे? और अच्छी फील्डिंग वहां पे, शूज का शानदार इस्तेमाल करते हुए वहां पे रन आउट होने का खतरा, तालमेल में कमी। माय गॉड, आउट हो गए वहां पे और बैट छूटा था तो रिप्लेस में जरूर देखने की कोशिश करेंगे। ताहिर, ये आपने क्या कर दिया? अब जीतना नामुमकिन सा हो गया। रिप्लेस में जरूर देखने की कोशिश करेंगे। रिप्लेस आज हमारे पास अवेलेबल है नहीं, तो 9वें विकेट का पतन होता हुआ सेक्रेटरी टाइटंस और परेशानी में आए हैं और परेशानी की वजह बनी है विकेट। ताहिर पेविलियन की ओर जा रहे हैं। अब चाहिए 50। शौकत आए खेलने के लिए आखिरी जोड़ी मैदान में और चेयरमैन डीडीसी श्रीनगर का खेमा बहुत खुश, और क्यों ना हो। अब 29 गेंदे 50 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए और आज यहां से जीत लेंगे चेयरमैन डीडीसी श्रीनगर की टीम और इस टूर्नामेंट को अच्छे से फिनिश करेंगे और आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में काम करेंगे। जो गलतियां, जो खामियां इनकी रही है उस पर पूरा काम करने की कोशिश होनी चाहिए इनकी। और आखिरी जोड़ी मैदान में क्या इसी गेंद में काम तमाम करेंगे फुरकान। पार्ट टाइमर का इस्तेमाल किया था अगर हम फुरकान की बात करें, एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत थी और एक्सपेरिमेंट किया फुरकान और सम्मान दिया, खेला बैक टू द बॉलर, कोई भी रन नहीं मिला इस गेंद पे। डिफेंस किया और क्या इन 4 गेंदों में बड़े शॉट के लिए जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लिप को काफी क्लोज रखा है और स्लिप पॉइंट पे एक खिलाड़ी है, शॉर्ट कवर लगाया गया है। ओह, बल्ले का मुंह खोलना चाहते थे वहां पे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई भी मिलन नहीं हुआ। डॉट गेंद 50 अभी भी चाहिए। रुका रेड अब 11 के आसपास हो गई है। अब नामुमकिन है इस मुकाबले को जीतना। खेला वहां पे कवर्स के तरफ, कोई भी रन नहीं मिला। अच्छी गेंदबाजी फुरकान की, क्या मेडन ओवर रहेगा इनका? ये देखने वाली बात होगी। अभी भी 2 गेंदें बची है फुरकान के इस ओवर की। फुरकान चले, अंपायर का इशारा आता हुआ अंपायर ने फजा में हाथ बुलंद किए। 1 और रन मिलेगा अतिरिक्त के रूप में, 1 और रन, स्कोर में इजाफा 127 9 विकेट के नुकसान पे।
फुल टॉस पे लिया गेंद को, कवर्स के जानिब खेला, कोई भी रन नहीं मिला। आखिरी गेंद इस ओवर की, हो अब स्ट्राइक रहेगी शौकत के पास। तो यहां से 4 ओवर्स बचे हैं, 49 रन चाहिए, जीतना नामुमकिन। सेक्रेटरी शहर में सैमसंग लाया है इजी शॉपिंग के लिए एक एथोराइज स्टोर, जहां पे आप अपने घर के लिए ले सकते हैं अच्छे अप्लायंसेस। सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बेबी बिन, जवाहर नगर, जहां आप टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एसी, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन्स या एसेसरीज ले सकते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद सैमसंग फाइनेंस प्लस फैसिलिटीज, जो आपकी जेब का प्रेशर कम करेगा और आप अपने घर के लिए मनपसंद अप्लायंसेस बिना बजट कॉम्प्रोमाइज कर ले जा सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं बहुत सारी शॉपिंग और लेना चाहते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, विजिट सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बेबी बिन, जवाहर नगर। CLC Coaching Center, Airport Road, Paripura. Here we go. The first ball of the over, number 70. Oh, what a ball! Taheen Forokwani, who has been now given the ball, just wrapped the innings up, sealed the deal. And just watch him going back to the top of his bowling mark. Such a long run up he has. And he's bowling too quick. Manager of Chairman DDC Srinagar cricket team just chips in it. Oh, falling short. Oh my goodness, not hitting the target directly. He could have been walking back to the pavilion, had the ball, hit the target, and luck deserving and favouring him for just saving himself. And Taheen Forokwani, who is having a very, very long run up. In he goes. Just watch him. Beautiful line. Great ball. Just making sure he just pitched the ball up. And Shaukat not able to hit the ball. Just a wicket away. Chairman DDC Srinagar Cricket Club, and eventually something to celebrate and something to smile about. Short of land, my goodness. Oh, it's a wide. Oh, that was a nasty ball. It's just hitting the deck hard. First 3 balls, bang on the target. Next ball, just down the leg stump for a wide. And now he comes back. In he goes. Damn! What a beautiful line this is, and look at the celebration of Taheen Forokwani. My goodness, he's enjoying his wicket at the moment, and this is all. Secretariat Titans all out on 128, and they fell short, I believe, by a margin of around 47 runs. A comprehensive victory at the end if we talk about Chairman DDC Srinagar. And finally they've got some time to celebrate and something to go with positive mind. If we talk about the J&K Qualifiers League, and from the perspective of Secretariat Titans, good start. They were 80 for 2, but as Danish departed, no other batsman could chip into confidence. कश्मीर के शाही जलवे दिखा घुमा के बल्ला लगा दे पार पलक झपक के उड़ा दे गिली तेरे हर कदम पे लाखों दुआएं बिजली की रफ्तार दिखा कश्मीर के शाही जलवे 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 दिखा तू जीते या फिर हारे हमको तुमसे है प्यार अभी और बहुत मैदान है तू खेल खेल में खेल दिखा खेल दिखा मैदान में तू खेल दिखा मैदान में तू खेल दिखा क्रिकेट किन्ने द्राई लो दोस्त दोस्त
बैट्समैन ने रन करे चोर क्या बैट्समैन ने रन करे चोर क्या बैट्समैन ने रन करे चोर बॉलर लोग कताई लो लो दोस्त दोस्त सरी आई लो लो बॉलर लोग कताई लो लो दोस्त दोस्त सरी आई लो लो क्रिकेट गिंदने ट्राई लो लो क्रिकेट गिंदने ट्राई लो लो कश्मीर के शाही जलवे दिखा कश्मीर के शाही जलवे दिखा कश्मीर के शाही जलवे दिखा विकेट भी तेरा बैट भी तेरा शॉट लगा रन बना दिखाते जलवे चौके छक्के बाजू तेरे जैसे बिजली कश्मीर के शाही जलवे दिखा 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 घुमा के बल्ला लगा दे पार पलक झपक के उड़ा दे गिली तेरे हर कदम पे लाखों दुआएं बिजली की रफ्तार दिखा कश्मीर के शाही जलवे 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 दिखा तू जीते या फिर हारे हमको तुमसे है प्यार अभी और बहुत मैदान है तू खेल खेल मैं खेल दिखा खेल दिखा मैदान में तू खेल दिखा मैदान में तू खेल दिखा क्रिकेट गिंदने ड्राई लो लो दोस्त दोस्त सरी आई लो लो क्रिकेट गिंदने ड्राई लो लो दोस्त दोस्त सरी आई लो लो जोश सान सरी आमची रंग रंग वर्दी लगती क्रिकेट मैच जमाई लो लो दोस्त दोस्त सरी आई लो लो क्रिकेट मैच जमाई लो लो दोस्त दोस्त सरी आई लो लो बॉल वर्स चिल्ली सिटी बॉल अपोर बैट्समैन ने रन करे चोर क्या बैट्समैन ने रन करे चोर क्या बैट्समैन ने रन करे चोर बॉलर लोग कताई लो लो दोस्त दोस्त सरी आई लो लो बॉलर लोग कताई लो लो हेलो सरी आई लो लो क्रिकेट गिंदने ट्राई लो लो क्रिकेट गिंदने Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the post-match presentation. This is Fashion Fiesta, man of the match presentation out here for the match number 20. It was a Pool D match. It was Chairman DDC Srinagar Cricket Club fighting and locking horns against the likes of Secretariat Titans. Toss was won by the captain of DDC Srinagar and they batted first. They scored 175 in their allotted 18 overs. Remind you, they were deducted by 2 overs. And when Secretariat Titans came back for the chase, they were looking quite great and comprehensive, quite solid, 80 for 2. But as Captain Ehsan Danish departed, then the players just came and they were just like scattered of the cards. Eventually, Chairman DDC Srinagar have got the victory comprehensively. We've got the 2 captains over here. First of all, would love to have a talk with the losing captain, Mr. Ehsan Danish. Please come to the front and have a talk with us. Ehsan Danish, I believe tough luck for you. You know, you started off very well to chase down, but eventually not getting over the line. Yeah, exactly. I would like to say it's very hard to chase here because the batting line was not up to mark. We played, we gave a good start, but unfortunately they did not capitalize on that thing. So it's always hard luck to be on the losing side. And talking about capitalization, when you came on to bat, you were looking great. You got the second half century of the tournament, but as you departed, I believe no other batsman from the other
side could go for the implementation? Yeah, exactly. I would like to say it all depends on me how I would like to chase the target. But unfortunately, when I was in the crease, it was looking easy to run a ball, every ball. But once I got out, it's very hard for them to score runs, and the batting is not up to mark as it's very competitive tournament here, and it should be. I would like to say if we had a 2-3 batters, the results should have been different. And talking about 3 consecutive losses, so you believe, just finishing this very tournament at 3 losses, some kind of work and some kind of hard work to be done to come back stronger in the next edition? Yeah, we would like to work on that thing where we failed here. It's very hard to be on last on the table, and we will look on the things where we can improve, and hope so next when we'll be here it will be a good result for us. And tough luck today and better luck for the future. Thank you, sir. Thank you. Captain Ehsan Danish of Secretariat Titans. Now let's talk to the winning captain. We've got with us Mr. Tahin Farquani, who is the manager of Chairman DDC Srinagar Cricket Club as well. Tahin, first of all, congratulations. Thank you, sir. First of all, I thank to Allah जिसने हमें हिम्मत दी और कामयाबी दी। आज ये हमारा 3rd मैच था, पहले 2 हमने हारे, तो वो भी अल्लाह ताला, मेहनत पूरी नहीं हुई, कोशिश हमारी पुरजोश थी हमारी कोशिश, बस अल्लाह का देना था आज मैच। और बहुत प्लेयरों ने मेरी मेहनत भी की, अच्छे से लगन से खेला, बैटिंग भी हो गई, बॉलिंग भी हो गई। बात करेंगे अगर आपके पहले 2 मैचेस नो डाउट आपको लॉस मिली, लेकिन स्ट्रॉन्ग कम बैक, इवन दो कि अभी इस टूर्नामेंट में आपको आगे जगह नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ तो आप बेहतरीन लेकर जा रहे हो, कुछ आपका कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से बूस्ट अप हुआ होगा। जी वो तो सही बात है। पहले मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन डीडीसी श्रीनगर मलिक आफ्ताब साहब का, कि जिन्होंने हमें हर एक फील्ड में सपोर्ट किया। हमारा टीम उनके इनाम से था और पूरा सपोर्ट उनके मिला, यूनिफॉर्म वगैरह हर एक चीज़, जिस फील्ड में हमको हेल्प चाहिए थी उस फील्ड में वो हेल्प करते हैं। और बात करें प्लेयर्स की, इनको एक बूस्ट मिला आगे जाने का, ये एक प्लेटफॉर्म है ANN ने निकाला है। हम वी आर वेरी थैंकफुल टू ANN न्यूज़, उन्होंने एक मद्देनजर रखे प्लेयरों पे ये आगे लाया ये टूर्नामेंट। इट्स वेरी ह्यूज फॉर अस, हमारे लिए बहुत कुछ है इस मुकाम पे आना, मेरे प्लेयर्स का यहाँ इस मुकाम पे आना। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुजार हूँ, मैं इस टूर्नामेंट का हिस्सा हूँ और मेरी टीम भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा। और अगर बात करेंगे ANN न्यूज़ ने जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड किया यंग गनर्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, आप अपने हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? आई बिलीव कि इट्स वेरी सक्सेसफुल आउट हियर, डेफिनेटली सक्सेस और कामयाबी मिल रही है। इंशाल्लाह कामयाबी तो मिलेंगी इंशाल्लाह, बट मैं ये एक बात आपके माध्यम से ANN न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो कि टैलेंट है कश्मीर में, JK से पूरा तरीके से इनको हेल्प नहीं करता है। मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी से भी गुजारिश करता हूँ, हमारी यंग जनरेशन उनको सपोर्ट कीजिए, वो मेरी गुजारिश है। और पूरी गुजारिश है JK CA से और ANN टीम से भी ऐसा टूर्नामेंट निकाले, ये हमारे लिए खुशी की बात है। ANN जो टूर्नामेंट निकालते, इट्स वेरी थैंकफुल टू ANN न्यूज़। Congratulations and have best time. Thank you. And now, Fashion Fiesta Man of the Match. And to present away this Man of the Match, I would like to request Mudassir Yaqub Saab, Executive Editor ANN News. It was not a tough call, simply not a tough call. It goes to none other than Furqan Shabir for his beautiful 74 runs and a wicket as well. Furqan Shabir, please come to the front and receive your Fashion Fiesta Man of the Match from Mudassir Yaqub Saab. Congratulations for your brilliant performances. Just few words with you. Thank you. फुरकान साहब, ब्यूटीफुल स्टार्ट, जिस तरीके से आपने इनिंग्स का आगाज किया और बीच में थोड़ा बॉलिंग का भी आपको मौका मिला, एक विकेट भी आपको हासिल हुई, मेरे ख्याल से बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस, क्या कहेंगे? एक्चुअली जो बैटिंग थी हमारी, तो वो स्टार्ट इसी तरीके से करना चाहते थे कि थोड़ा सा आज 220-230 का टारगेट देना चाहते थे, इसलिए कैप्टन ने यही बोल के भेजा था कि आप हिटिंग के लिए जाएंगे आगे। यूजुअली मैं मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता हूं, तो आज ओपन के तौर पर आया तो बहुत मजा आया खेलने में। अगर बात करेंगे स्टार्ट की, स्टार्ट आपका बेहतरीन मिला, करीबन 107 रन आपको स्टार्ट मिला, लेकिन जिस तरीके से फिनिश होना चाहिए था उस तरीके से फिनिश नहीं हुआ। जी बिल्कुल, वो सही बात है, फिनिश अच्छी तरीके से नहीं हो पाया। एक्चुअली जो मिडिल ऑर्डर था वो थोड़ा डिस्टर्ब रहा आज, उसकी वजह से थोड़ा स्कोर कम हुआ, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि हम मैच जीत गए। अगर बात करेंगे प्लेटफॉर्म की जो ANN न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा, तो इसके हवाले से कुछ अल्फाज आपके साथ? जी बिल्कुल, मुदस्सिर भाई के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हर सपोर्ट किया है हमें, मतलब बचपन से ये ग्राउंड में भी आते थे, हमें सपोर्ट करते थे कि आप खेलो, और ANN का भी बहुत सपोर्ट है इसके लिए कि ये टूर्नामेंट्स प्रोवाइड करती है, जिससे कुछ यंग लड़कों को एक्सपोजर मिल जाता है बाहर खेलने के लिए।
तो थैंक यू फॉर एन न्यूज़। चलिए, congratulations for your man of the match. Thank you. Furqan Shabir, man of the match for his 74 runs and 1 wicket. And that's all what we have from this man of the match presentation. It was a match number 20 Pool D match. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वादी में पहली बार 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के साथ साथ नीट, जेई और आईआईटी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। अब वादी के तलबा भी कोटा राजस्थान के तजुर्बाकार और मुमताज मुदर्रिसों